Good morning, all of you. Pradam Akshay, Sasmita, good morning, Sangeeta, good morning, all of you. So, welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. And today is 29th October, and we'll discuss national international news. I hope the slides are visible and I am perfectly audible. Please confirm so that we can start the session. As you know, that Diwali sale has been extended. The very good morning, because the Diwali sale has been extended. Those who want to join in our courses, 31st would be the date. It. Thank you for the confirmation. So 31st would be the date of ending of these sales. Okay. So फाउंडेशन बैच हो और फाउंडेशन बैच इंग्लिश हिंदी, फाउंडेशन बैच इंग्लिश एंड ओडिया, मेंस combo batch having both test series as well as the crash course. Pariksha, this is only for test series, this year mains and mains crash course. Okay, so in any such course आपण discount पाई परिवे दिवाली सेल एक्सटेंडेड जोटा है 31st October पर्यंत. Good morning, Birbal. So let's start today's news. Cloud seeding number 1, IIP growth, index of industrial production growth, UN Peacebuilding Commission. Relocation must be voluntary. We'll see that what kind of relocation this news is talking about. Emission reduction, civil aircraft production, and early warning system for the Himalayas. So these are the national and international news. The first one is cloud seeding. Cloud seeding trials done to combat surging air pollution. So the Delhi government, in collaboration with the Indian Institute of Technology, IIT Kanpur, carried out 2 cloud seeding flights on Tuesday in the national capital region, aiming to induce artificial rainfall to wash out pollutants. Okay, to wash out pollutants, artificial rainfall. From the last few weeks, we are discussing this artificial rain, or what we call the cloud seeding, right? The MOU between Delhi government and IIT Kanpur was signed on 25th September 2025 with the help of IIT Kanpur. During the trials, the aircraft released seeding material. Seeding material means the material which will help to condense the existing cloud, the material which will help to condense the existing cloud, এবং ସେ କୋଉ material ଗୁଡ଼ିକ silver iodide and salt based flares. ତାମାନେ जो existing cloud ଅଛି, cloud form ହେଇଛି, ସେ existing clouds को एमाने कौन करिवे, condense करिवे. कारण आपण जदि rainfall और precipitation रो cycle आपण जानिथिबे, evaporation, कंडेनसेशन मीन जो क्लाउड फॉर्मेशन हम सेटा कंडेन्स हम, कंडेन्स हला पर अधिक ठंडा हला पर आपण देखिबे से गुडिक वाटर मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हो जाए एवं वाटर मॉलिक्यूल एते हेवी हो जाए. नाउ इट कम्स डाउन टू द अर्थ. ओके, जोटा का हमें प्रेसिपिटेशन बोली कहूचे. इवापोरेशन, कंडेनसेशन एंड प्रेसिपिटेशन ये होचे आपनकर रेनफॉल रो साइकिल जोटा हमें कहूचे. तो सेहि पई ई जो क्लाउड existing cloud अछि सेटा को कंडेंसेशन प्रोसेस करूची, ताको कन्वर्ट करूची वाटर मॉलिक्यूल रे. वंस दे विल बी हेवी एवं से गुडी का तळको आसीबा स्टार्ट करिवो, दैट मींस प्रेसिपिटेशन हवा स्टार्ट हबो. Moisture content in target clouds was very low. This is something very kind of limitation. Kada experts or scientists are saying it all depends on the moisture content in the cloud. जदि cloud काफी ड्राई थिबो ताकू से कोठू कंडेंस करिवो. कंडेंस सेतबेले करि परिवो जेतबेले मॉइस्चर कंटेंट थिबो. सो इट मस्ट हैव द मॉइस्चर कंटेंट इन टारगेटेड क्लाउड्स was very low, 15 to 20%. This is one such limitation अपन कोई परिवो, which scientists say significantly reduced chances of meaningful rain. तो वर्षार chances बहुत कमी जिवो. Experts caution that cloud seeding is a temporary or emergency measure. Obviously, it cannot be
a regular phenomena or it cannot be a substitute of this air pollution. ଏଠି ଆମେ air pollution ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ agricultural activities, suppose agricultural activities ବର୍ଷା ହଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା, I mean if it would be something around few amount of rainfall, agriculture କାମକୁ easy କରିଦବ. So that could be a possible solution कि गोटे particular area रे agriculture ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, so cloud seeding could be beneficial. But let's say ये जो permanent kind of or 3 to 4 months जोटा कि air pollution होची national capital region रे, if you go for this cloud seeding or artificial rain, how could it help to mitigate this air pollution? ये होची समस्तंगर गोटे डाउट, कारण it would help अपन को temporary पाई. Okay, so it cannot be substitute addressing root sources of pollution. This initiative is first of its kind in Delhi, indicates third such experiment since 1957 and part of winter pollution mitigation strategy for the city that frequently records very poor AQI levels, that is what you call the air quality index. ठीक है जी, next को जिबा. And next news is IIP growth index of industrial production. The index of industrial production recorded 4% year-on-year growth in September 2025, slipping marginally from 4.1% in August. Okay, what exactly this IIP is all about? It shows the performance of industrial sector, or what you call the secondary sector. It shows the performance of the industrial sector. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भाव में ग्रोथ होइछि. ओके, एंड पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपण कहि परबे दिस हैज लेसर इन कंपैरिजन टू ऑगस्ट. ओके, जुलाई रे देखन 3.5 थिला, सेटा बॉडी की 4.1 हितला, एंड तापर आपनकर वर्तमान 4% को पळे आसे. Early data show that cumulative growth for April to September 2025 half year period stands out 3%. Okay, जदि आपण अप्रैल रु सेप्टेम्बर पर्यंत देखिबे, अप्रैल मई जून अगस्त सेप्टेम्बर ये टाइम रे आपण देखिबे स्लोएस्ट ग्रोथ आपनकर ओनली 3%. सेक्टोरल ड्राइवर देखिबे, मैन्युफैक्चरिंग showed some resilience. Okay, in July manufacturing grew only 5.4%. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे रेजिलियंस कहीं देखा मिलूँ, कुड बी ए पॉसिबिलिटी ये जो आपनकर ट्रेड वॉर जो वर्तमान चली विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड रेस्ट्रिक्शन आम कहीपर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ आपन कहीपर से गोटे कुड बी दैट इज वन फैक्टर. वीक स्पॉट माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स कंटिन्यू टू ड्रैग डिलेइंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल मोमेंटम. ओके, तेणु माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सफरिंग, एंड माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी हूँ कोर ऑफ दीज इंडस्ट्रियल सेक्टर. कारण माइनिंग नहले आपण कोनोसी फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करि परिबे नहीं, और इफ यू डू नॉट गो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री चली परिबो नहीं. सो माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर द foundation or the base of this in manufacturing sector, and both are performing poorly. The IIP is a short-term indicator that tracks the volume of production of industrial goods in India, covering primarily sectors of mining, manufacturing and electricity. तेणु जो आम इंडेक्स बाहर करूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, से तीन जिनस को कैप्चर करूँ, गोटे माइनिंग आस्पेक्ट को कैप्चर करूँ, गोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैप्चर करूँ, गोटे एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी. फॉर्मली इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स दैट मेजर चेंजेस इन physical volume of production. It major changes in physical volume of production of a selected basket of industrial products during a reference period relative to a base period. Okay, that means index ro actually kamo kono. What is the role of an index? Index is a measure which shows a kind of a comparison with respect to what? Current year रे previous year सहित गोटे comparison करिवा. And obviously किसी basket of goods industrial products को ही हमें कौन करूचे, compare करूचे with the base year and current year. यार main motive कौन? To know how much change. यदि अपने national income को देखिए, national income हमें जोटा कुछ गोटे GVA, gross value added. ये GVA कहले कौन? ना GVA होची how much value has been added
with respect to how much value has been added with respect to the industrial sector or the manufacturing sector in a particular period of time. Say 3 months ही पारे, से 6 months ही पारे, और 1 year ही पारे. And IIP actually सेटा को show अपन को करेगा. Index of Industrial Production will give you that idea that how much change it can bring with respect to the manufacturing sector, industrial sector. It is published on a monthly basis by the Ministry of Statistics and Program Implementation via National Statistical Office, what we call the NSO. Okay. এটা মনে রাখিবে, বেলে বেলে কোয়েশ্চেন আসে মন্থলি বেসিস রে পাবলিশ করা যায় ইন্ডেক্স অফ ইন্ডস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন एंड से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रो रिलीज ही करे सेटअप की मेथोडोलॉजी एंड फीचर्स देखो तो बेस ईयर करंट बेस ईयर इज 11 to 12 इंडेक्स वैल्यू इज 100 तो वर्तमान रो बेस ईयर कोटा 2011 to 12 and what is this base year is considered normally, I am not saying mandatorily, normally or usually a normal year. नॉर्मल ईयर कहीं कह जाऊँगी ना सेमती किसी abnormal performance या abnormal economic activities नथिबो, so that it would be easier for the policy makers and experts to make a comparison, to make a fair comparison. आपण देखिए 2020 रे कोविड पैंडेमिक आसिला, आपण कोनोसी इंडेक्स को यदि 2020 कोविड पैंडेमिक सहित कंपेयर करेंगे डेफिनेटली इफ यू इट विल गिव यू ए glorifying data. Why? Because COVID time रे सब किछि नेगेटिव चलितला. Whatever may be a slight growth, it will have a significant impression. It will create a significant impression कि भाई हमर ग्रोथ बहुत अधिक अछि. तो हम गोटे नॉर्मल ईयर सहित जदि कंपेयर करिवा, it will give us a perfect idea. सेते पई बेस ईयर को मध्य कंसीडर करा जाय. Okay. Now moving to sectoral coverage and weightage according to Ministry of Statistics and Statistics and Implementation. Mining huji 14.37 weight, manufacturing which is having the highest quantity of weight 77.63% and electricity 7.99%. Now आपण को बना रोटे डाउट असतो सर weight कोन लिखा है जी, weight हुजी टोटल केते क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हमें कंसीडर करूचे. मैन्युफैक्चरिंग रो जेहेतु बहुत अधिक प्रोडक्ट्स हमें नौचे सेटा हमें मैन्युफैक्चरिंग रो वेट बोली कहूचे. फॉर द प्रीवियस ईयर 11 and 12 series has covers 839 items clubbed into 407 item groups under the 3 sectors. ओके, टोटल हमें देखुचे एथि केतेटा प्रोडक्ट 839 आइटम्स को हमें कैलकुलेट करूचे टू गेट द आईआईपी डेटा. Now next is United Nations Peacebuilding Commission. India was among the first countries to recognize women as indispensable agents of peace, citing that Indian women medical officers served in the Congo in 1960s, long before the United Nations Security Council Resolution 1325 formally called it. Okay. किछि कंट्री जोटा यूएन आपण जानिथिबे, यूएन रो गोटे पीस कीपिंग मिशन अछि. एबे रिसेंट आमे ताको न्यूज रे भी देखिथिले पीस कीपिंग मिशन. ये पीस कीपिंग मिशन कोन रिसेंट आमे न्यूज रे देखिथिले कि यूएस हैज कट डाउन द फंड सिग्निफिकेंटली टू द पीस कीपिंग मिशन. तनो सेति पई यूएन हैज डिसाइडेड दैट पीस कीपिंग मिशन रो स्ट्रेंथ को आहुरी कम करबा पई. एटा न्यूज रे थिला, बट नाउ द कॉन्टेक्स्ट इज what is this peacekeeping mission? Peacekeeping mission means a group of people, basically they are from the armed forces, they will be trained and deployed in a particular zone जो को हमें conflicting zone बोली कहूचे और disturbing zone बोली कहूचे, will be considered कि समाने peace को establish करेवे. So 1960s रे कॉन्गो रे women peacekeeping mission इंडिया तरफ representative भी थिले. Okay, India's first all-women police unit for a UN mission in Liberia in 2007. Male member तो बहुत आगुरो छन, but female the women peacekeeping mission जो हमारा 2007 रे हमको देखिबा को मिलथला helped inspire local women in conflict zones to join security services. Okay, तो ये होची गोटे जिंस. India's broader efforts in gender and responsive peacekeeping, broader efforts
in gender response peacekeeping. Example, the Center for United Nations Peacekeeping in New Delhi hosts training courses for women peacekeepers from global south. ओके तो बर्तमान आम चाहूचे जो ग्लोबल साउथ बेसिकली द अफ्रिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज अच्छी दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिप्लॉय देयर वुमेन जो आर्मी पर्सनल्स मान को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग रे टू विथ रेस्पेक्ट टू द जेंडर रिस्पॉन्सिव पीस कीपिंग फोर्सेस. इंडिया अंडरस्कोर्ड हाउ वुमेन लेड डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट. Okay, example, 1.4 million elected women representatives contributes to peace, social cohesion and governance. Basically जोटा हमें पंचायत राज विषय कहूचे कि इंडिया ठू आउ कि अधिका बुझी परिबे नहीं कि women मानकर contribution with respect to what ए जो cohesion, harmony, peace कारण हमरो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे हमरो ऑलरेडी रिजर्व हमें रखिछु women माननको पई. नेक्स्ट देखिबा, relocation must be voluntary. कुआଯାଉଛି बर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तरफ गोटे नुआ गाइडलाइंस आसी जो टाइगर रिजर्व गुड़िक आमर अच्छी से टाइगर रिजर्व रे ओबियसली फॉरेस्ट ड्वेलर्स आपन को देखा मिले. फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माने जो माने ट्राइबल कम्युनिटीज सेठिकार जो माने इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज से माने होजंदी माने 1000 इयर्स आपन कहि परिबे सिविलाइजेशन जब टू स्टार्ट हलानी से सेठी रही आछन. तो ड्यू टू दिस टाइगर रिजर्व एंड वी हैव दिस क्राइटेरिया आमे कौन करूचे जेमते बे आपण रिसेंटली देखितले सिमिलपाल नेशनल पार्क को आमे पढुतले सिमिलपाल गोटे नेशनल पार्क बोली बट रिसेंटली सिमिलपाल को गोटे नेशनल पार्क रो स्टेटस मिलेला एंड जोटा कि कंसीडर करागला दिस इज द 107th नेशनल पार्क इन इंडिया एंड सेकंड इन ओडिशा. तो ऑफिशियली तो हेई नथिला कारण अनऑफिशियली हमें जानुतले ये ऑफिशियली काहे कि न हेतला. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? द ओनली रीजन वाज द ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द peripheral of this Similpal National Park. Once they have been resettled, rehabilitated and relocated to a new area and then this ताको हमें national park रे status देइछु. तो देखिबा नुआ guidelines कोन आसे छी. The relocation of forest dwelling communities from tiger reserves must be exceptional, voluntary and evidence based measures. तणु सडनली आमे कहा कि हमते रिलोकेट करिबा नै एटा को एक्सेप्शनल केस रे देखा जिवो वॉल्यूंटरी भी हिथिबो एवं एविडेंस बेस्ड भी हिथिबा दरकार. Adding to the ministry's new guidelines, the policy emphasizes that communities should also have the option to continue living in the forest, exercising the rights under the Scheduled Tribes and other tribal for traditional forest dwellers Act 2006, either individually or a community. ओके तेणु ये जो ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट अपन अच्छी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अनुसार इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव इन दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रेमाइसेस तंकर ओरिजिनल जो ड्वेलर्स माने जो माने अछंती. तेणु एटा होची एक्सेप्शन जदि हमें तंको रिलोकेट करूचे. ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन रिलोकेशन गोटे फ्रेमवर्क फ्रेम करा जायछि is proposed to be jointly developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Tribal Affairs to set procedural standards, timelines and accountability mechanism. Procedural standard means if they will be rehabilitated then को प्रकार procedural standard रखा जिवो and timeliness केते टाइम भितर समान को relocate करा जिवो and accountability की रहिबो. This has been framed under this National Framework for Community Centered Conservation and Relocation. The policy suggests creation of a national database and conservation community interface to record and monitor relocation compensation, post-relocation status of the communities. तमने सरकार सजेस्ट करिसेंती कि गोटे नेशनल डेटाबेस भी कंस्ट्रक्ट करा जिवो जोठी के आपनकर सब डिटेल रहइबो. प्रथम डिटेल कोन रहइबो ना को एरिया रे केते लोकन को रिलोकेट करागला कोठी की रिलोकेट करागला सेमानकर वर्तमान आगुरु कंडीशन कोन थला वर्तमान कंडीशन कोन अछि बिकॉज़ जेतबळे से माने रहउचंती फॉरेस्ट भितरे दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन फॉर देयर लाइवलीहुड बिकॉज़ दे आर जनरली यूजिंग द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज
by selling those minor forest produce. For example, jhuna, lakho, esu jinso gudiko. Once they come outside or once they come away from that forest, definitely it is a livelihood issue. Se livelihood issue को सरकार केमती मैनेज करूचंती या सरकार केमती तंग मन को अकोमोडेट करूचंती, that is a matter of concern. So सेति ପାଇଁ को आजौची गोटे नेशनल डेटाबेस गोटे कंस्ट्रक्ट करा जिवो. Through that database everything will be monitored. It calls for annual independent audit for relocation projects by approved agencies to access compliance, Forest Rights Act and Wildlife Protection Act and Human Rights Standard. तो जो relocation करा है वो definitely से Forest Rights Act और compliance है वो, so Wildlife Protection Act को भी compliance है तो. I think I have given one example many a times in the class. जिनते आपण देखिबे what I have seen. जो आपनकर मध्य प्रदेश रे गोटे अछि सतपुरा टाइगर रिजर्व. सेठी मध्य प्रदेश जो कम्युनिटी अछंती सेमन को कहजे गोंड कम्युनिटीज, गोंड ट्राइबल कम्युनिटीज, एंड दे लिव इन दैट फॉरेस्ट. ओके, वर्तमान सरकार को तरफ सेमन को कंप्लीटली रिलोकेट करा जायकी से पाखापाखी अंचल रे पुणी थरे सेमन को प्रॉपर रिलोकेट करा जायछि. बट सबुठ यूनिक जिंस होउछि कोन ना जो रिलोकेशन करा जायछि, जो गोटे पर्टिकुलर विलेज एरिया गोटे क्रिएट करा जायछि, से विलेज रो ना गुडी को एग्जैक्टली सेम ना रे ही रखा जायछि. जहा गुरु थिला जो टाइप रो पैटर्न थिला एग्जैक्टली सेही टाइप रो पैटर्न ही विलेज को क्रिएट करा जायछि पूरा, एवं विद गुड फैसिलिटीज, गुड हाउसिंग फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सेम टाइप ऑफ गां क्रिएट करा जायकी सेमानंकु सेठी रिहैबिलिटेट करा जायछि. Now, ये कौन पाइन करा गला सेमती ना, because they should not feel the alienation. सेमन को इटा न लागू पर निजरो selfishness पाइन सेमन हमको कौन करचंदी every time they are disturbing us. This is something very uniqueness जोटा कि सरकार को तरफ एफर्ट दिया जाउची. So states have been flagged for concern over non-implementation of the Forest Rights Act and compelled relocations. Ministry is responding to multiple representation, Gram Sabha and tribal communities. Okay, तो जो constantly गोटे states मानक तरफ रू ये डिमांड आसुतला कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को हमें with the letter and spirit हमें ताको implement करूने. So वर्तमान को आजौची कि नहीं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को implement करा जिवो. ठीक अछि, moving to the next, emission reduction. UN report finds countries emission reduction set for goal set in Paris. The Conference of Parties 30 relates synthesis report by the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC. The report published ahead of the COP30 in Belém, Brazil, जोटा आपनकर नवंबर मासरे ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हवा को जाउची, that is COP30 बोली को आजिवो, examines अपडेटेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन. ये नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कोन ना पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो आपनकर क्लाइमेट डील जोटा 2015 रे आपनकर हितला, सेठी सब कंट्रीज मन को कोआ गला कि भाई वॉलंटरली अपन गोटे एनडीसी सबमिट करिवे एवरी ईयर. एंड व्हाट इज दैट एनडीसी, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन? दैट मीन्स एवरी कंट्री विल शो देयर कमिटमेंट, गोटे काइंड ऑफ ए टारगेट, सेल्फ इम्पोज टारगेट विथ रेस्पेक्ट टू दिस renewable energy solutions, reduction of emission and all. So finds that if fully implemented, these pledges would reduce global emissions by only 17%, okay, below 2019 levels by 2035. जदि जो हम तक implement कले जो NDCs गुडी को submit करा जाइची 64 countries द्वारा, तब at least 2035 सुधा we will be able to reduce the emission by 17%. को लेवल रे 19 रे जहा एमिशन थिला 19% हमें तक कमी परिबा by 2035. By contrast, to keep global warming within the limit of the 1.5 degrees Celsius, emissions would need to be cut by around 37% by 2035, and for 2 degrees Celsius about 57 degree from 2019 levels. तमने आपण चाहुचंती जदी 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज भीतर रखिबा पई तबे आपन को 37% कम करिवार अछि, 35 सुधा, सॉरी हां 35 सुधा 37%, 50 सुधा 57% विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, आपन जदी 2 डिग्री ऑन एन एवरेज सेल्सियस जो टेम्परेचर अछि कम करिबा पई,
The 64 countries whose NDCs were analyzed represent only about one third of the global emission. Many major emitters have not yet submitted updated plans. Reason ହେଉଛି ସେ କାରଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୋଭରେନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ବଡି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଏନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେଲ୍ଡ ଅର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି ଫୋର୍ସ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜଡ category ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଡେଟା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ only 64 countries have been submitted. The report also finds that 73% of the new NDCs include an adaptation component, that is steps to build resilience to climate impacts alongside the mitigation. Okay, ତେଣୁ 33% ଆପଣ ଦେଖିବେ adaptation component को भी focus करा जाऊँ. What is adaptation? ना जदि climate change ही गला ओके ये क्लाइमेट चेंज होउची मनकर आपनकर एवरेज टेम्परेचर बढ़ुची ग्लेशियर्स आर डाइंग दे आर मेल्टिंग एंड सी लेवल इज राइजिंग तो जो आपनकर आइलैंड कंट्रीज गुडिक अछि से गुडिक कोन हो दे विल सून सबमर्ज तो सेमान को रिहैबिलिटेट करैबा को पड़िबो सेमान को रीसेटल करैबा को पड़िबो की ऑप्शंस कंट्रीज हाईलाइट इन देयर प्लान्स आर फॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी ट्रांजिशन along with carbon capture storage in some cases. Okay, so ये हो जाए अपन जिनसो. The report is being seen as signal that global emissions may begin to bend downwards, but the pace and scale remain far short of what science call for. तो जेती की टार्गेट होचे से टार्गेट तो केबे भी अचीवेबल हवा भारी डिफिकल्ट कारण हेई पारू नाही बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मागुर भी अपन को कही छी जितेबाला आपण देखिबे क्लाइमेट समिट रो सेतेबाला डेवलपिंग और डेवलप कंट्री से माने दुई जण जाको ऑपोजिट पार्टी ही जानते डेवलप्ड वाला कहती कि वी आर नॉट द हाईएस्ट एमिटर्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना ब्राजिल एमन होचने हाईएस्ट एमिटर्स तो आमर आर्गुमेंट कौन रोची भाई तम टाइम रे तमे डेवलप हे गेलो यू हैव बर्नड ए लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल किंतु आमको भी तो से जिनस करिबार सो दीज आर द आर्गुमेंट्स व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम बोथ द पार्टीज ड्यूरिंग द क्लाइमेट समिट. Now moving to the civil aircraft production, HAL signs pact with the Russian firm for civil aircraft production. The Hindustan Aeronautics Limited and the Russia's United Aircraft Corporation have signed an MOU jointly produce the SJ-100 civil commuter aircraft in India. SJ-100 is a twin-engine narrow-body passenger aircraft with over 200 units already in operation across 16 commercial airlines. Basically, this narrow body passenger aircraft which will be used as आपनकर जो उड़ान स्कीम अछि जो रीजनल कनेक्टिविटी को एनहांस करबा पई HAL stated that the SJ-100 could be a game changer for short haul regional connectivity under the India's उड़ान scheme. The regional areas को connect करबा पई under the MOU HAL will have manufacturing rights for SJ-100 aircraft meant for the domestic customers. तेणु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पाखे से लाइसेंस रहिबो सो दैट ये एयरक्राफ्ट निजे प्रोड्यूस करि परिबो. दिस मार्क द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस हाल्स AVRO HS 748 प्रोग्राम 1961 रो 1988. ओके ता परे कोनोसी पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो नथिला तो वर्तमान पैसेंजर एयरक्राफ्ट मध्ये प्रोड्यूस करा जिवो. India's aviation market is projected to need of 200 jets for the regional connectivity and 350 more for the nearby international destination in the next decade. The program is expected to boost the Indian aviation and manufacturing ecosystem, generate employment and strengthen private sector. The MOU was signed in Moscow by the Prabhat Ranjan from HAL and Oleg Bogomolov from the United आपनकर जो रशिया जो एयरक्राफ्ट कंपनी आपनकर अछि एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन सी ही आपनकर एटा साइन करछन. तेनु बेसिकली आपण देखिबे हम तो मिलिटरी जिंस तो करूचे हमें पैसेंजर एयरक्राफ्ट तयारी करू नथले हमें इंपोर्ट करूतले वी आर परचेजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल जो एयरलाइंस कंपनी गुडी जेमती आपण देखिबे जो एयर इंडिया आपनकर क्रैश हेतला से एयर इंडिया क्रैश हेतला ये तो होची एयरलाइंस बट एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट थिला से थिला आपनकर बोइंग कंपनी देखिबे एयर इंडिया बहुत गुड़े बोइंग कंपनी को यूज करूची
बोइंग कंपनी एयरक्राफ्ट को यूज करूँ जो फल्टी ये सब जिन आमको देखा मिलूँ तो सही टाइप रही बोइंग आपंकर एयरक्राफ्ट तैयारी करुचे से टाइप रे डोमेस्टिकली आम एयरक्राफ्ट को तैयारी करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द हिमालयस। Why Himalayas are become the hot zones of disaster? Himalayan arc is showing a dramatic rise in disaster. Okay. A recent study found that 687 disasters in India between 1900 to 2022, 240 occurred in the Himalayas. तो जितने डिजास्टर है सबुठ अधिका डिजास्टर आपन को 240 टी है केवल हिमालय रे। चेंजेस इंक्लूड हायर इंटेंसिटी एक्सट्रीम रेनफॉल, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, snow ice collapse and related to cascading effect. So these are some of the many such disaster we have seen. Climate change and rapid warming retreating glacier, that means glaciers are gradually dying and human pressure, construction, tourism, infrastructure are contributing to increase the vulnerability. Okay. The combination of steep slope, fragile geology, heavy orographic precipitation, expanding settlements in hazard-prone zones adds to the risk. तो ये सब जिन गुड़िक जो अच्छी तो obviously से आपन को रिस्क प्रोन करे दूची। फ्राजाइल जियोलॉजी, हेवी orographic precipitation, expanding settlement ये सब जिन गुड़िक एंड इट्स प्योरली अ मैन मेड आपन कहि परिबे। Role and importance the early warning system. Provide advance notice to imminent hazards, earthquake, landslide, cloudburst, so that lives can be saved and evacuation made. Reduce the impact of the cascading hazard. केमती ना heavy rainfall को कम करिवो. Okay. Inform infrastructure planning, settlement zoning and disaster preparedness. Foster community resilience or local populations are empowered to respond टू वार्निंग एक्चुअल। तो हिमालय आप देखिए केवल लैंडस्लाइड नुहे, फॉरेस्ट फायर नुहे, अपन को अर्थक्वेक भी देखा मिलूँ। देयर आर मल्टीपल सच आपनकर डिजास्टर गुड़ी को देखा मिलूँ। व्हाट इज बीइंग डन इन उत्तराखंड? स्टेट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम हैज बीन ऑपरेशनल इन 2021। अबाउट 170 accelerometers in seismographic areas, seismogenic areas, mobile siren alerts for the moderate earthquakes, data transmission by a continuous network. The Tibetan Plateau High Altitude Alpine Region (EWS) for ice rock collapse and debris flows have been deployed in Sedunku Valley, uses geophone sensors, water level monitor and remote sensing. So this is Tibetan प्लाट्यू रे भी आपण देखि परिबे ए टाइप रो सेंसर्स गुडी को अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करा दी छी जोटा कि से माने टाइमली वार्निंग देई परिबे ह्यूमन बीइंग को, सो दैट इवैक्यूएशन हे परिबे, लाइफ कैन बी सेव्ड। रिसर्च लेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशंस डेवलपिंग लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन फ्रेमवर्क डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल फॉर द हिमालयस। तो सेठी से माने लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन भी एथरो करिबे डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल पैटर्न को देखि कि, सो दैट timely evacuate ये सब करा जाई परिबो। Gaps and challenges. Though some system exist, many valley, catchment, slopes and glacial lakes remain unmonitored. The Himalayas stretch 2400 km and each valley subcatchment may need dedicated sensor and system. So पूरा Himalayan region needs sensor and system. Sensor and communication constraint, terrain is rugged, remote, often without reliable telecom, mobile networks, weatherproof low cost sensor needed. टेक्नोलोजी, नेटवर्क, कम्युनिकेशन ये सब न रहिले आपण केमती प्रेडिक्ट करिवे कोन, तेनु ई जिंस भी गोटे चैलेंज हे जाउची। मल्टी हैजर्ड इंटीग्रेशन, मेनी सिस्टम आर सिंगल हैजर्ड इन द अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड रादर देन मल्टी हैजर्ड। ओके, सपोज वर्षा हला, धीरे धीरे वर्षा हला, लैंडस्लाइड हला, फ्लड हला, ईटा भी तो होनी, अर्थक्वेक संग संग आसला डिजास्टर कर देला। ओके, community involvement and local capacity. Technology alone is not enough. Local communities must train to respond to warning and maintain equipment and evacuate. Data sharing and cross-border coordination. Many Himalayan rivers are transboundary. Hazards upstream may affect downstream across border. System needs shared protocols.
funding, maintenance, and policy priority. The message is that Himalayan disasters are not always treated as a national priority despite the evidence of accelerating risk. Okay, ତେଣୁ man-made ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ରେକମେଣ୍ଡେସନ କ'ଣ କରିବା? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲୋ କଷ୍ଟ ସେନ୍ସର ନେଟୱାର୍କ ଆକ୍ରସ୍ ହିମାଲୟ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଅର୍ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଡେଭଲପ ମୋବାଇଲ ଆଲର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାଇରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ରିମୋଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, institutionalize multi-header early warning center under the National Disaster Management Authority, strengthen land use zoning laws, limit new infrastructure in hazard prone zones, involve Gram Sabha in the hazard mapping, promote international and co-regional cooperation. Okay, जो मैंने मेन्स लिखुचंदी एथरक सेमान मध्य ये रिकमेंडेशन को यूज करि परिबे कि कोन कोन रिकमेंडेशंस अछि हमें यूज करि परिबा फॉर दिस टू हैव ए अर्ली वार्निंग सिस्टम कारण डिजास्टर गोटे रेगुलर फेनोमेना आपण पई देखिबा को मिलुछि। बर्तन आसन देखिबा इन द रीसेंट दिल्ली ट्रायल ऑफ क्लाउड सीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वाज एक्सप्लिसिटली नोटेड एज क्रूशियल फॉर द सीडिंग फ्लाइट टू सक्सीड? क्लाउड्स विथ एटलीस्ट 50% मॉइस्चर कंटेंट। According to Indian government policy NTCA guidelines, village relocation from core areas of Tiger Reserve must be voluntary based on informed consent and Gram Sabha and affected people. A recent UN synthesis report, the NDCs ahead of COP30, found that if implemented, the submitted places would reduce global emission by around % of 2019, that is 17% of 2019. Under the MOU between Hindustan Aeronautics Limited and United Aircraft Corporation, the SA-100 aircraft, which of the following is correct? Okay. Domestic rights of manufacture for domestic customer and projects makes India first complete passenger aircraft production in decades. In context of Himalayan region, effective multi-hazard early warning system must ideally include all of the following except deployment of drones alone without ground sensors. Okay, बाकी दीटा अच्छी मेन्स रो क्वेश्चन आर्टिफिशियल रेन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बाकी दिवाली सेल एक्सटेंड ही 31 अक्टोबर आप देखि नेबे जो मैंने चाहूँ कोर्स रे जॉइन करने 31 अक्टोबर पर्यंत लास्ट डेट अच्छी मात्र आ किसी दिन ही रहा तेणु कोड यूज करेंगे JN लाइव जो थे आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, कोड यूज करेंगे JN लाइव। कॉम्बो बैच भी अच्छी मेन्स जो मैंने एग्जाम दौरान सेम टेस्ट सीरीज भी अच्छी सेमती आपंकर क्रैश कोर्स भी अच्छी। थैंक यू। PDF आपको ये मिल जाए।